Welcome to dear students. Today's our topic is the variations. As you know that the variations deals with the difference. More of these difference may be the morphological, physiological, cytological, and behavioristic among the individuals of the same species and the offsprings of the same parents, which we have discussed in yesterday's video. Types of the variations generally variations are described as the somatic or somatogenic variations or germinal or blastogenic variation. So there are generally two types, the somatic and the germinal. Now the somatic or somatogenic variations are the variations caused in the somatic or the body cells of an organism, also called as modifications or acquired characters. Here, these variations are caused in the somatic cells, or we can say generally the body cells, because they are got by an individual during its lifetime. Non-inheritable. These variations, the somatic variations, they are non-inheritable. That means they does not pass from one generation to another, from parents to offspring. They are not the inheritable variations, but they are the non-inheritable variations. They are caused by the three factors are responsible for that. Firstly, the environmental factors, then use and disuse of organ, then conscious efforts. Now the environmental factors. Various environmental factors causing variations are medium, light, temperature, nutrition, wind, water supply. These factors bring about slight modifications in animals, but much more modifications in plants. That means they have the large effect on the plants as compared to the animals. As environmental factors affect us on meristems of various parts, thus a slight change in meristematic activity can have permanent effect on the plant. Also, it affects on flowering and the flower pots. Some important environmental factors are medium. Now, the type of medium cause many variations among the organisms. For example, heterophyly, nature of amphibian plants, Ranunculus aquatilis, show dissected leaves inside the water, whereas entire leaves outside water. See our stockard. He placed eggs of fish pendulous in seawater containing magnesium chloride. The young ones reared in such medium possesses one eye instead of the two usual lateral eyes. क्या है कि सियोर स्टॉकॉर्ड एक साइंटिस्ट था, उसने ऐसा किया कि पेंडुलस फिश जो है उसके एग्स को उसने उस सी वाटर में रखा जहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड ज़्यादा था. फिर क्या हुआ कि उसे जो यंग वन उसे जो बच्चे निकले फिश के वो कैसे थे, वो वन आइड थे इंस्टेड ऑफ द टू यूजुअल लेटरल आइज. दो आंखें होने के बजाय उनमें सिर्फ एक ही आंख थी. दिस वाज अ इफेक्ट कॉज्ड बाय द मीडियम, जिसको हम हेटेरोफिली बोलते हैं. नेक्स्ट फैक्टर इज द लाइट. Shade produces elongated internodes and thinner and broader leaves, whereas strong light, it helps in production of more mechanical tissues and smaller and thicker leaves. So this is the effect caused by the two forms of the light, the shade and the strong light. In shade, elongated internodes and thinner and broader leaves are produced. Whereas in case of the strong light, what happens? Production of more mechanical tissues and smaller and thicker leaves are produced. In animals, flatfish, the soria, what happens which habitually rests on left side. ये फिश जो है
ये अक्सर जो ये हैबिट इसका ये है कि रेस्ट लेफ्ट साइड पर करती है. It develops pigmentation in the eyes on right side, which is exposed to sun. और ये जब रेस्ट करती है लेफ्ट साइड पर तो सनलाइट उसके राइट साइड पर पड़ती है. उससे क्या होता है कि राइट साइड पर उसकी पिगमेंटेशन होती है, डिफरेंट कलर्स उभरते हैं और उसकी आंखें भी राइट साइड में है. If left side is exposed to sunlight in the young fishes, both eyes and pigmentation develops on that side. अब जब हमने इस फिश को लेफ्ट साइड के जब चूंकि रेस्ट करती थी किस साइड पर, यस लेफ्ट साइड पर, जब हमने उसको रेस्ट करवाया राइट साइड पर तो लेफ्ट साइड को हमने एक्सपोज किया बिफोर द सनलाइट, व्हाट हैपेंस, पिगमेंटेशन और आई जो थे वो उसी साइड पर यानी लेफ्ट साइड पर डेवलप हुए हैं इंस्टेड ऑफ द राइट साइड. Next factor is the temperature. It affects the metabolic activity of organisms and rate of the transpiration in plants. The metabolic activities and the transpiration. Transpiration is the loss of water in the form of vapors, mainly through the leaves. What happens in the, what is the effect of the temperature here? It affects the metabolic activity of the organism and the rate of transpiration in plants. Plants growing in hot areas show nanism, that the dwarfism of aerial parts and increase in root growth. What happens? The plants which grows in the humid conditions, in the xerophytic conditions, there they show the dwarfism of aerial parts. That means they have the short aerial parts, whereas they show the increase in the root growth. In humans, strong sunlight and high temperature, it causes the sun-tanning of skin by producing more melanin for protection against excessive insolation and ultraviolet radiation. जब हम ह्यूमन बॉडी को एक्सपोज करते हैं हाई टेम्परेचर में तो क्या होता है, उसमें सन टैनिंग होती है, ये डार्कनेस होती है, इसको टैनिंग हम बोलते हैं, वो अपेयर होती है स्किन पर. किस वजह से? क्योंकि सनलाइट में जो बॉडी है, स्किन है, वो मेलानिन प्रोड्यूस करती है ज़्यादा अगेंस्ट एज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सेसिव इंसोलेशन एंड द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मेलानिन जो है इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. जब उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो डार्क स्पॉट जो है वो बॉडी पर ज़ाहिर होते हैं. नेक्स्ट इज अ न्यूट्रिशन. Organisms provided with optimum nutrition grows best, whereas undernourished shows stunted growth, where the differentiation between the nodes and internodes is minimum. A larvae of honeybee fed on royal jelly grows into queen, whereas one fed on the bee bread develops into worker. What happens in case of bees, honeybees? द लार्वे ऑफ हनी बी जब हम इसको फीड करते हैं रॉयल जेली पर, रॉयल जेली जो है इसको ये एक सिक्रीशंस है दे मेड बाय द वर्कर जो है इसमें इस हनी बी नेटवर्क में जो वर्कर्स होते हैं जो एक सिक्रीशन वो सिक्रीट करते हैं उसको रॉयल जेली बोलते हैं. उस पर जब लार्वी फीड होता है तो वो क्वीन बन जाती है. वायरेज जो हनी होता है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलन एंड हनी जो है उस पे जो फीड जो होता है जो लार्वी उस पे फीड होता है वो बन जाता है वर्कर. नाउ द नेक्स्ट इज द वाटर. प्लांट्स ग्रो इन डिफिशिएंसी soils or in humid areas show several modifications like succulents, spines, succulent stomata, thick cuticle. वो प्लांट्स जो उस सॉइल में ग्रो करते हैं जो जहाँ पर क्या होती है कि डिफरेंट टाइप्स की डिफिशेंसीज होती है या जो ह्यूमिड एरियाज में ग्रो करते हैं उसमें वो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस वो प्लांट दिखाते हैं. वो सकलेंट नेचर दिखाते हैं, उसमें लीव्स की जगह स्पाइनस उभरती है, स्टोमेटा मोर फंक्शन होने की इंस्टेड ऑफ दैट वो सकन हो जाता है, ड्राई हेयर्स होते हैं. क्यूटिकल जो है वो बड़ी थिक होती है, दैट मीन्स इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर इन द ह्यूमन कंडीशंस. Now the second is the use and disuse of organs. कहीं पर ऑर्गन को यूज या यूज करने की वजह से भी उसमें वेरिएशंस पैदा हो जाती है.
organs which are put to continuous use develops more than less used organs. वो organs जिनको हम continuously use करते हैं, what happens, उनमें development ज़्यादा होती है. For example, muscles of wrestler और player. एक player, एक wrestler जो है, जो अपनी muscles को ज़्यादा से ज़्यादा काम लेता है, तो उस वजह से उसमें muscles ज़्यादा develop हो जाती है. Now, the next is the continuous effects. That means here it is the effect which we going through. The next, the intelligent animals show modifications due to conscious effects. For example, receiving education, training up some pests, then the slim bodies, boning a pinna, long neck, small feet. कहीं कहीं पर इंसान जो है ना किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करते हैं तो उससे वो चेंज आती है, वो वेरिएशंस पैदा होती है. जैसे वो एजुकेशन में डिफरेंट वेरिएशंस हम देखते हैं, डिफरेंट आईक्यूज़ हम देखते हैं. उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ सम कुछ पेस्ट्स के को जो है पेट्स की जो ट्रेनिंग होती है तो उसमें हम देख लेते हैं. स्लिम बॉडीज़ के ऊपर स्ट्रेस होता है इंसान तो वो स्लिम बॉडी डेवलप होती है. इसी तरह जो है बोरिंग ऑफ पिना इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर, या लॉन्ग नेक है या स्मॉल फीट है. These are the conscious effects. Now the next are the variation germinal or belastogenic variations. Variations produced in germ cells or the sex cells. सेक्स सेल जो है ना, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है, प्लाइड सेल्स होते हैं जिनको हम जरस सेल्स बोलते हैं, उनमें जब वेरिएशन जो पैदा होते हैं उनको बोलते हैं जर्माइनल वेरिएशंस. दीज आर इनहेरिटेबल. ये इनहेरिटेबल है, यानी ये इनका जो है कि ये ट्रांसफ़र होती है जनरेशन टू जनरेशन, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. दे मे बी प्रेजेंट इन एंसेस्टर्स और मे फॉर्म सडनली. ये दो टाइप की होती है. जर्माइनल वेरिएशंस हम कहेंगे या इनहेरिटेबल वेरिएशन, दो टाइप की. एक ये है कि कहीं पर ऑलरेडी किसी जीन पूल में पाया जाता है, किसी डायनास्टी में ऑलरेडी चलता है, वरासत में मिलता है, या कहीं पर ये अचानक किसी मुकाम पर किसी जनरेशन में अचानक ये हो जाती है. These variations may be ये continuous भी है और discontinuous. Continuous, they are also known as fluctuating variations, typical of quantitative characteristics, show differences from the average which are connected with it through small intermediate forms. They are produced by, किससे होती है ये, chance separation or segregation of chromosomes at the time of gamete or spore formation. जब गैमीट फॉर्म होती है, मियासिस टेक प्लेस होती है, स्पोर फॉर्मेशन हो जाती है, तो बाई चांस कहीं पर सेपरेशन या सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम जब होती है तो उसमें ये हो जाती है, तो वहाँ पर ये चीज़ें उभरती है. जैसे क्रॉसिंग ओवर और एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, जब क्रोमोसोम जो है वो क्रॉसिंग ओवर कहते हैं या सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मियासिस के दौरान, तो वहाँ पर ये चांसेस है कि ये कंटिन्यूस वेरिएशंस हो जाएंगे. और चांस कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, या फर्टिलाइजेशन में क्या है कि जब गैमेट फ्यूजन हो जाता है तो वहाँ भी यह है कि जब क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन होती है तो वहाँ भी इसके चांसेस, इस टाइप के वेरिएशन की चांसेस ज़्यादा होती है. दीज वेरिएशंस आर आल्सो नोन एज रिकम्बिनेशंस. इनको रिकम्बिनेशंस भी बोला जाता है. प्रोवाइडेड बेसिस फॉर इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ये डार्विन ने बोल दिया है कि जब उसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी है, उसने कहा कि ये जो कंटिन्यूस वेरिएशन जो है दे प्रोवाइड द बेसिस फॉर द इवोल्यूशन, कि ये बेस प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए. Now the types of the continuous variations, generally there are two types are there. They are the substantive and the meristic. Substantive, they influence appearance including shape, size, weight, color of a pot or whole organism. For example, height, length of various organs, color of nose, skin, eyes, hair, yield of milk and eggs. Meristic, they influence number of parts of an organism. For example, number of grains in an ear of wheat. ईयर का जो एक कर्ल जो होती है ना उसको बोलते हैं ईयर, व्हीट की, दैट नोन एज ईयर ऑफ व्हीट.
सेगमेंट्स इन अर्थवर्म या अर्थवर्म के सेगमेंट्स के अंदर हम ये देखते हैं. Discontinuous, it's also known as salutation or the discontinuous or salutation or mutation variations. These are the mutations which you are very familiar to that subject, the mutations. Discontinuous variations are sudden, unpredictable, inheritable departures from the normal without any intermediate stage. Abruptly हो जाती है, कोई intermediate stage नहीं है. ये वेरिएशन जो है बड़ी सडनली हो जाती है, ये डिसकंटिन्यूअस है और जिनको हम म्यूटेशंस बोलते हैं. Organisms in which mutations occur are known as mutants. These variations form the basis of mutation theory of evolution. डीवेरीज 1902 डीवेरीज ने 1902 पर जिसने म्यूटेशंस के ऊपर काम किया है और उसने फेमस म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी है. तो वहाँ पर इसने बोला कि ये वेरिएशन जो है ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस, इनकी बेस जो है ना वो म्यूटेशंस है, यानी म्यूटेंट्स. डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस और म्यूटेशंस आर कॉज्ड बाय, अब इसके कॉजेज देखिए, क्रोमोसोमल एब्रिवेशन. क्रोमोसोमल एब्रेशंस में क्या होता है? लाइक डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन एंड ट्रांसलोकेशन. These are the different events which takes place during the when the chromosome goes for the exchange of the DNA or exchange of the segments. Change in the chromosome number through aneuploidy and polyploidy. Change in gene structure and the expression due to the addition, deletion or change in the nucleotides. Now its types, as usual, it has also two types, substantive and meristic. Substantive, they influence the appearance like shape, size and color of an organism as usual. Example are the short-legged Ancon sheep, or second one is the hornless cattle. Meristic, the influence number of parts of an organism. For example, polydactyly. Dactyl, the digits. Here means 6 or more digits in humans. Now the importance of variations. Variations make some organisms or individuals better fitted in the struggle for the existence. जीने के लिए बहुत ज़रूरी है ये. जीने की स्ट्रगल में, उसकी दौड़ धूप में वेरिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती, because they help in the adaptation. They help to produce new traits, the characteristics in the organisms. They allow breeders to improve races of useful plants and animals, which leads to the different types of the revolutions. Constitute raw material for evolution. Evolution के लिए raw material को तैयार करते हैं. As a result of that, the new species are formed. Though and the diversity becomes more and more dense. Give each individual a distinct individuality. एक हर इंडिविजुअल को एक अपनी पहचान ये देते हैं. Help to produce or develop resistant varieties. ये बड़ी मुफीद होते हैं जिनकी वजह से हम वेरिएशंस की वजह से हम रेजिस्टेंट वैरायटी जो है वो तैयार करते हैं. Now this was all about the variations. We have discussed in 2 videos the genetics, the heredity, then the variations, and in the coming up we will discuss about the Mendelian work. This was an important chapter on which the base of the genetics were formed, and this was a revolutionary work carried out by the Mendel. Wishing you all best of luck. Thanks.